Hello and welcome to Kashmir Now. I'm your host Lipakshi Khurana. Let's take a look at what made news this week. POK activist highlights Pakistan's gross human rights violations at 54th UNHRC meet in Geneva. POK economy at all-time low, all thanks to Pakistan's draconian policies. District-level badminton championship organised in Udhampur provides platform to glory for Kashmir's youth. Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises launches 550 skill development programs at Sher, Kashmir University of Agricultural Sciences and Technology. And in our special section of Incredible India, we take you to the country's culturally rich city of Bhubaneswar for an exciting tourism fair showcasing multi-dimensional aspects of incredible India. The people of illegally occupied territories POK and Gilgit-Baltistan have remained victims of Pakistan's draconian laws and policies for several decades now. The two regions are swept in widespread protest against the illegal regime of Islamabad. To highlight the miseries and hardships the people of POK and Gilgit-Baltistan have endured for around 77 years, a POK activist, Shaukat Ali Kashmiri, presented an intervention at the 54th United Nations Human Rights Council in Geneva, appealing international community to take due cognizance of human rights violations and injustice done to them at the hands of Pakistan. We have a report. The illegally occupied territories of POK and Gilgit-Baltistan are swept in widespread protests against Islamabad's illegal regime. For the last 77 years, the illegally occupied territories have endured unimaginable hardships and persecution from Islamabad's proxy governance. A POK activist, Shaukat Ali Kashmiri, highlighting miseries of the people of POK and Gilgit-Baltistan at the 54th session of the United Nations Human Rights Council in Geneva, accused Islamabad of imposing colonial and discriminatory policies in violation of international laws. The people of Pakistani administered Azad Jammu and Kashmir and Gilgit-Baltistan have been completely marginalized. Islamabad has imposed an alien culture on both peripheries, depriving local of their history, natural resources, tradition, customs, languages, and history through its institutions and instrument of educational curriculum are serious violations of various international laws. The current situation in Gilgit-Baltistan and POK is worrisome. The galloping inflation, excessive electricity bills, illegal taxation, and unavailability of subsidy on necessary food articles has broken the backs of residents. The discrimination on the basis of ethnicity and cultural identity is another pain point for the majority of Shias living in Gilgit-Baltistan. Insurmountable pressure the residents are under has yielded them. To make the situation even worse, Islamabad has deployed state machinery to quell the raised voices of activists and the locals who demand justice and their basic human rights. Recently, the people of Pakistani-administered Azad Jammu and Kashmir and Gilgit-Baltistan has staged massive protests in the length and breadth of both regions, but Pakistani media has totally blacked out these massive peoples on road demand ownership of their natural resources, revival of their statehood, availability of subsidized food, essentials, exceeding electricity bills, and illegal taxes levied.
The intervention of the Kashmiri activist Shaukat Ali Kashmiri at the International Forum was again on the similar lines as of his past interventions. However, Islamabad has not relented upon its draconian policies and subversion of illegally occupied territories. It would be fitting to say that coronavirus that brought the world to a temporary halt was rather a micro issue against hardships and persecution the residents of illegally occupied territories have witnessed for decades. The draconian policies of the caretaker government and POK related to financial affairs have rendered local businesses shut and the traders defaulting on loans. The skyrocketing inflation has broken the backs of people. They are finding no way out from Islamabad's illegal regime and their economic policies. Their currency has reached a new low against the dollar, straining the local economy and businessmen in POK. We have a report. The residents of the illegally occupied POK region are disgruntled over the economic policies of caretaker government appointed in August this year. The so-called caretaker government in POK has increased petrol and diesel prices 2 times since it came to power. The decision was not well received by the residents as the region is already suffering high inflation and most of the local businesses have come to a halt. ये निगरान हुकूमत ने तो जो 2 दफा बम गिराया तूफान वो तो गिराया उससे पहले जो हमारे कारोबारी हालात थे वो बिल्कुल हम फारिग हो चुके थे कारोबार के लिहाज से तो पूरी मईशत हमारी तबाह हो चुकी थी यहाँ तक तो ये पोजीशन है सर कि हमारे कारोबारी लोग डिफॉल्ट कर चुके हैं वो अपनी प्रॉपर्टियां बेच के मुल्क से बाहर जा रहे हैं ये भी लोगों को पता नहीं है लेकिन चंद अरसे में आपको ये डेटा क्लियर हो जाएगा कि कितने लोग यहाँ से ये मुल्क छोड़ के चले गए हैं. The traders and businessmen are largely affected as they are mostly dependent upon the transportation costs. The locals had believed that the so-called caretaker government and their policies would bring some relief from inflation. But to their dismay, the additional measures such as ban on export of dollars and further hikes in petrol-diesel prices have plunged them into poverty. आम लोगों के ध्यान में ये होता है जब निगरान हुकूमत आती है तो चीजें एक जगह पे रुक जाती हैं लेकिन ये अनहोनी निगरान हुकूमत आ गई कि 2 दफा इन्होंने इतनी बड़ी महंगाई कर दी है कि हम हैरान हो गए कि ये निज़ाम किस तरह आगे चलेगा. तो मेरे ख्याल से अल्लाह ना करे मैं वो गलत बात की तरफ जा रहा हूँ कि माशी तौर पर मुल्क जो है वो डिफॉल्ट की तरफ चला गया हुआ है. ये इस वक्त इन्होंने एक आर्टिफिशियल इकानमी बनाई हुई है कि जी आर्डर हो रहे हैं जनाब डॉलर ज्यादा हो जाएगा डॉलर कम हो जाएगा. ये डॉलर को नहीं रोक सकते. डॉलर को रोकने का एक मैकेनिज्म है. आप बताएं ना आपकी क्या बरामदात और दरामदात हैं कि आप डॉलर को रोकेंगे. आप घर में बैठ के जोर जबरदस्ती डॉलर को नहीं रोक सकते. The local businesses blame Pakistan for defaulting on international loan payment and for creating an artificial economy as a stopgap measure to control the situation. The currency in POK reached a record low against the dollar in September, further strangulating the cross-border businesses with China and other nations. The locals accused the Pakistan-backed administrators for siphoning money from the region and wrecking their economy. ये वो लोग बैठे हुए जिन्होंने इस मुल्क का हमेशा बेड़ा गर्क किया कि जब ये कोई पॉलिसी बनाते हैं उससे पहले अपने तमाम रिश्तेदारों को अजीज़ो कारब को बता देते हैं जो ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबा के अंदर मौजूद हैं बड़ी बड़ी पोस्टों के ऊपर वो चाहे हमारी असम्बलियों में या हमारे अदारों में है उनको इन्फॉर्म कर दिया जाता है जनाब ये पॉलिसी आने वाली है. अब जो नई पॉलिसी है डॉलर पर पाबंदी की तमाम डॉलर मुल्क से बाहर चला गया और ये भी यहाँ बैठे हुए पाबंदी लगा के अब पाबंदी लगाने का कोई फायदा नहीं है. इन्होंने जानबूझ के इस मुल्क को डिफॉल्ट की उस तरफ जो है वो डाल दिया. Many small businesses have defaulted on loans in POK owing to high inflation
an economic crisis in the region. Some believe that the current situation of POK is worse than they had during the Corona period. जहाँ तक महंगाई की बात रही है, मैं नहीं समझता कि मैंने अपनी ज़िंदगी में इतनी बड़ी जो महंगाई देखी हो। कोरोना था, उससे लोग निकल गए थे, लेकिन मैं नहीं समझता कि इस महंगाई की ज़द में आके लोग बाहर निकल सकें। अल्लाह गरीबों का जो है कोई मदद करे। अल्लाह गरीब ताजरों का, छोटे ताजर, बड़े ताजर सब डिफ़ॉल्ट पे चलेंगे। तो हम अल्लाह से ही मदद की अपील करेंगे, क्योंकि इन हुक्मरानों से हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा कि ये अवाम को कोई रिलीफ दे सके। The illegally occupied POK has been bearing the brunt of Islamabad's illicit economic policies for more than 7 decades. The local merchants and residents are barely making it on false optimism and bogus condolences from the so-called caretaker administration, as the region's economy has crashed to an all-time low. Moving on, the Government of India is laying strong impetus to the sports infrastructure and youth development in the Union Territory of Jammu and Kashmir. In line with an aim to motivate and nurture youngsters in the field of sports, a district-level badminton tournament was organized in Udhampur. Around 70 players hailing from remote towns and villages participated in the championship. We have a report. A district badminton championship was organized in Udhampur with an aim to provide young badminton players a platform to build their future in the sport. District Badminton Association in Udhampur identified around 70 talented players from across the villages and towns of the district to participate in the championship. With a mission to provide equal opportunity to every young sporting talent in the country, the Government of India is building sports infrastructure and organizing championships in several districts of the Union Territory. बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिलता है पहली बात तो, क्योंकि देखो अब पहले हमें अवेयर नहीं थे फर्स्ट ऑफ ऑल कि यहाँ पर कुछ टूर्नामेंट्स भी होते हैं, पर अब सब जगह पता चलता है कि यहाँ पर टूर्नामेंट्स भी हो रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर आने के बाद हमें बताया भी जाता है कि सब कैसा होगा, आप लोगों को क्या क्या खेलना है, मतलब उसके आगे क्या होगा। एंड अब खेलेंगे, अगर हम जीते तो आपको पता रखे जैसे स्टेट नेशनल, उसके बाद वही होना है। तो फिर बहुत ज़्यादा मोटिवेशन गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, बहुत सारी स्कीम्स निकालती है। आजकल के बच्चों को हर गाँव से बच्चा आ रहा है, किसी को मतलब इनइक्वालिटी नहीं है, इक्वालिटी हर जगह है, ताकि कोई पॉलिटिक्स कुछ नहीं है, सबको जैसे उसका जितना अच्छा गेम है वैसे वो आगे बढ़ेगा। Sports is a time-tested activity to build leadership, motor skills, physical fitness and mental endurance among the young individuals. According to the president of Udhampur District Badminton Association, sports help youngsters in channelizing their energy in a positive way and also helps them shun unhealthy practices from their lives. हमारा ये होता है कि बच्चे जो हमारे अपनी पॉजिटिव एनर्जी जितनी भी है वो स्पोर्ट्स पे निकालें और उसके बाद अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें, ताकि जिस ढंग से आजकल आप देख रहे हैं कि बड़े बच्चे जो गलत रास्ते पकड़ लेते हैं क्योंकि उन्हें एक प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। बच्चे अगर स्पोर्ट्स में अच्छी तरह से खेलें तो इसके ऊपर अपना फ्यूचर भी बना सकते हैं, क्योंकि उधमपुर एक ऐसी जगह है यहाँ पर खिलाड़ी बहुत हैं लेकिन सुविधा कम थी। अगर अब हम लोगों ने ये देखा कि हम लोग खुद खेलते थे पहले, हमने जो चीज़ें हमने फेस की है हम चाहते बच्चे चीज़ें ना फेस करें, और इसी कारण हमने ये यहाँ पे एक टीम हमें स्टेट की तरफ से इनिशिएटिव दिया गया कि यहाँ पे आप बच्चों को भाई खिलाइए और एक उनका जो पॉजिटिव एटीट्यूड है उसको कहीं यूटिलाइज करें। For the youth of Kashmir, the tournament was a stepping stone to further make their mark on the national and international sporting arenas. The platforms like Halo India are also gaining significant momentum among the young individuals of the Union Territory.
स्पोर्ट्स एक अच्छी चीज़ है फिजिकल फिट रहने के लिए हमें, और गवर्नमेंट ने बड़ी अच्छी चीज़ें निकाली हैं। डिस्ट्रिक्ट अभी हम लोग डिस्ट्रिक्ट खेलेंगे, उसके बाद अगर डिस्ट्रिक्ट जीतते फिर हम लोग श्रीनगर जाएंगे स्टेट खेलने के लिए, वहाँ से जीतेंगे फिर आगे नेशनल है, और भी तरीके की जैसे गवर्नमेंट का खेलो इंडिया हम लोग वहाँ पे अपने स्कूलों को और अपने क्या बोलते हैं स्टेट्स को हम लोग वहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इससे बेसिकली तो ये बोलूँगा हमारा फिजिकल फिटनेस है। The Union Territory of Jammu and Kashmir has given several sporting talents to the country. The districts such as Udhampur and many remote regions are now endeavouring to bring their young talents to the fore. The Government of India too is not leaving any stone unturned in giving wings to the dreams of a new generation of sporting talents in the country. Well, the economy of the Union Territory of Jammu and Kashmir is largely dependent on agriculture. Nearly 70% of the population of the Union Territory is directly or indirectly engaged in the agriculture activities. To promote this promising sector and entrepreneurship in the field, Sher Kashmir University of Agricultural Sciences and Technology under the aegis of Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, MSMEs, held a launch ceremony of 550 skill development training programs for cultivating entrepreneurship and skills among different sections of the society in the Union Territory of Jammu and Kashmir. Take a look. Sher Kashmir University of Agricultural Sciences and Technology has recently hosted a launch ceremony for 550 skill development training programs for entrepreneurship under the aegis of the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, MSMEs. The ultimate goal of the ministry is to develop new businesses and instill an entrepreneurial culture in the Union Territory of Jammu and Kashmir by offering basic and advanced training for self-employment and entrepreneurship to the members of various sections of society. The Sher Kashmir University happens to be the only agricultural university which has been sanctioned the highest number of capacity building programs by the Ministry of MSME for the year 2023-24. मुझे बताने में खुशी हो रही है कि पहली बार पिछले साल इस मिनिस्ट्री ने इस यूनिवर्सिटी के लिए 66 प्रोग्राम अप्रूव किए थे, स्किलिंग प्रोग्राम, और उनकी सक्सेस को देखते हुए इस साल इस मिनिस्ट्री ने यूनिवर्सिटी के लिए 555 प्रोग्राम को सैंक्शन किया है, और ये देश में किसी भी एक यूनिवर्सिटी के लिए सबसे ज़्यादा स्किलिंग प्रोग्राम्स हैं। और ये शायद इस बात की तरफ इशारा करता है कि हमारी यूनिवर्सिटी और पूरी जम्मू कश्मीर की जो हुकूमत है, अब इसका जोर है कि अपनी यूथ को हमने स्किल करना होगा, ट्रेन करना होगा उनको बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप में। As the country shifts gear to become one of the largest startup ecosystems, the entrepreneurs from Kashmir are poised to be a driving force behind the development. Agriculture in Kashmir seems to be a promising sector for many young entrepreneurs who want their startup to be sustainable and success-oriented. The Sher Kashmir University, in line with their vision of Agriculture 4.0, is preparing and skilling a large number of students in the latest agricultural technologies. देश जो एक बहुत बड़ा एक दुनिया का स्टार्टअप इकोसिस्टम बन रहा है, उसमें जम्मू कश्मीर को उस मैप में हम कैसे लाएंगे, इसके लिए यूनिवर्सिटीज़, चाहे वो हमारी यूनिवर्सिटी हो, ज़री यूनिवर्सिटी और बाकी सारी यूनिवर्सिटीज़ का बहुत बड़ा रोल है। हमने अपनी यूनिवर्सिटी में एक इकोसिस्टम क्रिएट किया हुआ है, उसको हम कहते हैं कि इनोवेशन एंड स्टार्टअप इकोसिस्टम। उस इनोवेशन और स्टार्टअप इकोसिस्टम में आज हमारी यूनिवर्सिटी में करीब 20 स्टार्टअप्स हैं बच्चों के और फैकल्टी के, और जिनमें से 10 स्टार्टअप रजिस्टर्ड एज प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज़ हैं।
तो आने वाले समय में ये कोशिश होगी हमारी कि हमने अपने करिकुलम को इंडस्ट्री ओरिएंटेड हमने बनाना है और बना रहे हैं, और दूसरा अपने बच्चों को हमने एंटरप्रेन्योरियल बनाना है और हमने उनको इंडस्ट्री रेडी बनाना है। The university and the Ministry of MSMEs have supported many startups in their journey to become a big player in the market. Several entrepreneurs who attended the event praised the government department for providing them funding, technical know-how, and essential knowledge to scale up their businesses. I started my growing interest in dairy after reading several research papers, and finally we came to the execution part, जहाँ पे हमें एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट की तरफ से काफ़ी हेल्प हुई, एंड फर्दर इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल सपोर्ट हम कॉस्ट के पास गए एंड दे वर रियली हेल्पफुल, एंड वहाँ पे दे वर हैविंग सम MSME प्रोग्राम्स जिन वर्कशॉप्स में हमने पार्टिसिपेट किया, एंड they were very beneficial, and finally we had some of our own ideas, जैसे precision diet formulation हो गया, building of IoT devices हो गया, and how to harness the energy or the finances from our byproducts. So finally we have managed to reduce our burnout, और हमारा जो growth rate है that has been exceptional, I would say. Sanctioning 550 skill development programs in Sher Kashmir University of Agricultural Sciences and Technology is a leap forward in development and growth of the Union Territory. The event has opened doors for many young individuals from the Union Territory who aspire to become entrepreneurs or be industry ready for some good job opportunities. And now we take you to the culturally rich city of Bhubaneswar, where the exciting tourism fair took place right at the heart of this magnificent city. The tourism fair was an attempt to uphold the multi-dimensional aspects of incredible India. The fair was held to encourage state tourism among the backpackers and Odisha's travel enthusiasts. So whether you are an intrepid explorer, a nature lover, or simply looking to relax on beautiful beaches, Odisha has something special in store for you. India remains one of the most ethnically diverse countries in the world. Bhubaneswar, also known as the city of temples, is an ancient city in eastern India that is a thriving center for art and culture in the state of Odisha. Recently, in a bid to boost tourism among the travel fraternity and traveler enthusiasts of Odisha, Blue Eye India Private Limited, an established name in the field of tourism promotion in India, hosted a 3-day National Tourism Fair 2023 in Bhubaneswar. This 3-day travel trade show was organized by the Ministry of Tourism. Exhibitors from Madhya Pradesh, Rajasthan, Gujarat and Himachal Pradesh put their stalls at the tourism fair. टूरिस्ट का जो यहाँ फुटफॉल बढ़ा है उसका 2-3 चीज़ें मेन कारण हैं सर। उसका एक तो ये है कि यहाँ पे जो साफ़ सफाई है सर, और यहाँ पे जो टूरिज़्म के लिए जो स्टेप्स लिए गए हैं, बढ़ावा दिया गया है, यहाँ पे सारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, जो हमारे रोड्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं सर, और यहाँ पे टूरिस्ट डेस्टिनेशंस भी काफ़ी अच्छी तरह से मैनेज हो रहा है। और यहाँ पे जो रहने के भी जो ऑप्शंस हैं, यहाँ पे बहुत सारे होटल्स नए खुल गए हैं, 5 स्टार ऑप्शन से लेके बजट कैटेगरी तक, जो कि टूरिस्ट लोगों के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन दे रहा है। The government of Odisha has taken various steps from time to time to promote tourism by pronouncing progressive policies on tourism. The demand for tourism has changed as a result of the travel industry's tremendous rise. Over time, there has also been a rise in demand for stays. The tourism sector has grown manifold with the introduction of new and innovative products and experiences. It is recognized as a major instrument of employment creation, livelihood improvement and inclusive growth.
टूरिज्म डेवलपमेंट के लिए उड़ीसा में असीम स्कोप है, अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज आर देयर। हमारे पास 18 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, 2 नेशनल पार्क है, हमारे पास सिमिलीपाल में प्रोजेक्ट टाइगर है और हमारे पास भितरकनिका में प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल है, जहाँ पे जो पूरे दुनिया में ऐसे 2-3 जगह पे हैं, एक ऑस्ट्रेलिया में है और एक भितरकनिका में है। सो हमारे पास अट्रैक्शंस की कमी नहीं है। This 3-day exhibition also showcased new business horizon for further improvement of travel trade activities in the country. The tourism fair is not just to attract trade buyers and sellers from various sectors, but also to bring a large number of travelers seeking the best packages for hotels and tours. Indeed, the tourism fair in Odisha's tourism industry brought together the local travel industry, travel enthusiasts and other associated businesses under one roof. Well, that's all we have for you in this week's episode. Goodbye and take care.